बिजनेस के साइड डिस्कस कर रहे हैं तो लोगों को चॉइस बहुत ज़्यादा है, वो सही है, लेकिन जब सब्सक्रिप्शन मॉडल का आता है, आप न्यूज़पेपर भी चलाते हो, आप सैटेलाइट चैनल भी चलाते हो, सब्सक्रिप्शन में समवेयर इट डजंट वर्क आउट, द रेवेन्यू डजंट वर्क आउट। इसीलिए लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन दैट दिस द कंपटीशन फॉर एडवर्टाइजमेंट, द कंपटीशन फॉर पैट्रोनेज, द कंपटीशन फॉर टीआरपी, ये इतना ज़्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं डोंट यू थिंक द मीडिया इटसेल्फ इज मीडियाज वर्स्ट एनिमी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं भारत की बात करता हूँ। अगर आप न्यूज़ प्रिंट, आप खुद पेपर जर्नलिस्ट भी रहे हैं, आपने सारे माध्यम देखे, टेलीविज़न भी देखे हैं, आप एक त्रुटि समझिए। जब न्यूज़पेपर भारत में आया और उसके बाद जब टेलीविज़न आया, तो न्यूज़ कंटेंट कभी भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड बहुत बड़ा नहीं था। अगर अखबार आपकी कॉस्ट 15 रुपये थी तो आप सिर्फ 3 रुपये या 2 रुपये लेते हैं अखबार के, वो सब्सिडाइज प्रोडक्ट है। कभी भी आपने सब्सक्रिप्शन से पैसा नहीं कमाया उसके अंदर। मेरा वही क्वेश्चन है, जब सब्सक्रिप्शन से पैसा नहीं आता है। मैं आपको भी उसी का जवाब दे रहा हूँ। और यही प्रॉब्लम रही न्यूज़ टेलीविज़न के अंदर भी। हालांकि कुछ चैनल सब पेड हैं, पर बहुत ही कम, और कुछ उनको रेवेन्यू नहीं आता है। तो चाहे अखबार हो चाहे टेलीविज़न हो, कभी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू न्यूज़ में आया ही नहीं है। पहली बात तो ये गलत फहमी है जो करेक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, दुनिया में सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू अभी किसी के पास भी नहीं आ रहा है, साइजेबल रेवेन्यू। चाहे आप इकोनॉमिस्ट की बात कर लें, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर लें, जो सबसे इवॉल्व मीडिया नेटवर्क्स हैं वर्ल्ड के, उनके पास भी नहीं आ रहा है। उसका कारण है कि जो चीज़ लोगों को फ्री में मिलती है उसके लिए लोग पैसा देना पसंद नहीं करते, और जब तक आप उनको ऐसी चीज़ नहीं देंगे जो उनके काम आने वाली चीज़ है, उनकी यूजेबल है, जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको काम आएगी, वो उसके लिए पैसा नहीं देंगे। और हम तो वैसे भी वैल्यू बेस्ड सोसाइटी हैं, हमें तो अगर जब तक अच्छी डील नहीं मिलेगी हम तो पैसा बिल्कुल ही नहीं देंगे। सो विच इज़ वाई अब ये न्यूज़ को जो कमोडिफिकेशन हो रहा है, न्यूज़ का पैकेजिंग, न्यूज़ एज ए प्रोडक्ट, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि न्यूज़ की कमोडिफिकेशन एक टर्मिनोलॉजी है, पर उसके साथ साथ एवोल्यूशन भी हो रहा है। यानी कि एवोल्यूशन कैसे हो रहा है? अब जैसे कम्युनिटीज़ बन रही हैं, प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। पहले न्यूज़ आती थी लीनियर फॉर्मेट में और आप डिसाइड करते थे किसको क्या देखना है। अब आती है जब मुझे देखना है एज अ प्रोएक्टिव थिंग, when which I am a seeker, I seek what I want, whether it is an article or video। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, और उसकी वजह से आपको ये भी समझना पड़ेगा कि न्यूज़ इज़ नॉट ओनली पॉलिटिकल न्यूज़, न्यूज़ इज़ नॉट ओनली एंटरटेनमेंट न्यूज़। There is a lot of news which people want to know out there, but because we never knew that people want to consume that content, because some editor was sitting in a room deciding what people will watch, वो फैसला वो करता था, इसलिए पता ही नहीं था। अब पता लग रहा है कि हेल्थ के भी आपको अट्रैक्शन मिल रही है, अब आपको पता लग रहा है कि टेक की भी मिल रही है, अब आपको पता लग रहा है बैंकिंग, पर्सनल फाइनेंस की भी अट्रैक्शन मिल रही है। ऐसे ऐसे एरियाज का पता लग रहा है जिन पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाता ही नहीं था। न्यूज़ की डेफिनेशन और परिभाषा भी बदल रही है। नहीं, ये जो पैकेजिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं द स्कोप टू मैनिपुलेट, द स्कोप टू मिसलीड, ये भी ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल, जैसे उसमें भी एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि रिसेंटली डीप फेक हैज़ बिकम अ वेरी बिग कंसर्न। इवन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्पोक अबाउट इट ड्यूरिंग द दिवाली मिलन वेयर ही वाज एड्रेसिंग द मीडिया, एंड सब्सिक्वेंटली इट कॉट पीपल्स इमेजिनेशन। वी जस्ट हेल्ड द सेकेंड लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन डायलॉग विद जस्टिस सूर्यकांत, the Honorable Supreme Court Judge. He spoke very extensively on our platform on that also. It's a very real problem, and this problem is here to stay. But like many other problems, you can deal with these problems and face them when the opportunity comes. See, there is no perfect equilibrium even in media. ये optimum point है और ये पहुंच गया और इसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मीडिया के अंदर. If that were the case, I'll give you an example of duality. I had a tie-up with BBC, and for about 6 years we used to broadcast the BBC Hindi Bulletin on India News in the evening. During Balakot airstrikes, and this is to understand how difference of opinions can come in from a different perspective. During Balakot airstrike, after that, the Pakistani Prime Minister was addressing the National Assembly over there. Now, in our agreement, understanding was that we will not pull down any content, but if it is not in national interest, I reserve the right to take a call on the content. So there was no censorship. But I will define what is my national interest, not BBC.
So when this Balakot strikes happened, after that he was addressing the assembly and they cut it live to the Pakistani assembly. Now, I don't want to show the Pakistani assembly in my country at a sensitive time like that. It's not right. It's a call I took with my editors and I took it off channel. So BBC went into a whole tizzy and they sent us mail that there's censorship in media, you are being throttled, blah, blah, blah. Now, I have studied in England. I have dealt with the British. I know how they think and how they orient. So there's a possibility of them talking down to you also. So when the meeting happened, their editors were there, our editors were there. They said, oh, you have pressure from the government, this, that, whatever. And that's why you took it off. I said, no, this is my stand. It is my outlook on my nationalism. I am entitled to it. And therefore, I'll take a call on it. But you have a duality and duplicity in your approach. When you have, when there are, in Kashmir, for example, you call terrorists separatists. This is the language they use for terrorists. They call them separatists. But when it comes to the IRA, the Irish Republican Army, or the Welsh Republican Army, then you call them terrorists. You don't call them separatists. What is good for the goose has to be good for the gander also. That is the duplicity. Now my interest is profound to me as a country and as an Indian. They cannot tell me that there is no democracy in media or there is pressure from the government. Who are they to tell me? They have their own policy, they have their own outlook. I have my own. And if I don't have any pressure on me, how can the Western media tell you that we are better than you and you are lower than us? Because we have set the parameters, and according to these parameters, the freedom index is much higher there and much lower there. What is the index? What are the parameters? Who has decided? Who's the arbitrary authority of it? We don't know. So how do you look at the road ahead? I mean, you've been there for quite some time. You've seen all sides of the coin. I think role of media is definitely going to be very, very important. Mainstream media as well as digital and social and different manifestations that will come in. But what you have to understand is that this is in the true capitalist environment, this is the way democratization of media is going to happen and it's going to unravel before you. And that is why in the last 10 years you have seen what has happened in the world. You have seen the unthinkable things in politics happening all over the world. You get Mr. Donald Trump elected as the US president. You see the Arab Spring happening in the Middle East. You are seeing majority assert itself. ये मतलब एक तरीके से आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि मेजॉरिटी अपना ओपिनियन वॉइस करने पे भी मतलब शर्क करती थी या सोचती थी कि क्या हम ये बोलें, क्या ये सोशली करेक्ट है, क्या ये सोशली और पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है. ये ताकत सोशल मीडिया ने दी है कि लोग अपनी बात रख सके और बिना डर के रख सके. सो आई थिंक इट हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कम्युनिकेट, एंड कम्युनिकेशन इज द एसेंस, एंड मीडिया एज अ फोर्थ pillar of any democratic setup will play a pivotal role in times to come.